हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज हम लोग अपना नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट का, एंड वो है ब्लड रिलेशन सीरीज़। सो होप सो दैट यू ऑल आर गोइंग फाइन विद एट होम, एंड वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर नेक्स्ट सीरीज ऑफ आवर AKM app tutorial. So let's begin. This is the topic and new theme of our chapter, Introduction to the Blood Relation Part 1. So basically in this series we are going to, in this episode especially, this is a series of blood relation, but in this episode we are going to introduce all the concepts of blood relation. We will also see the concepts of family tree. What is that family tree concept? Please wait till last. This is very interesting episode and you should have to watch till last if you want to understand this concept, family tree. And yes friends, it's a request to all that if you haven't watched my previous episodes, please watch my previous episodes. The link is given in the description box. So without wasting any time, let's move to the part blood relation. So friends, blood relation basically होता क्या? I need not to explain you what is blood relation. आप लोगों को पता ही होगा ब्लड रिलेशन क्या होता है। जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं, हिंदी में अगर मैं आपको प्रोनाउंस करूँ तो जो खून के रिश्ते होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लड रिलेशन. But what is the importance of blood relation here? So let me tell you, blood relation is the most studied topic of logical reasoning, and it is one of the few topics which has found its importance in almost every entrance examination. Yes friends, ये लॉजिकल रीजनिंग का, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड के लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं, और इसका इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट एवरी एंट्रेंस एग्जाम में पाया गया है. एंड दिस टॉपिक टेस्ट द एनालिटिकल स्किल्स. व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल स्किल्स? It means that you need not to do any kind of calculations. You just need to analyze the things on based of diagrams, and that is what is termed to be as analytical skills. And that is what is mentioned here, that this topic tests the analytical skills of the students and how one can approach the solution of logical problems with the help of diagrams instead of calculation. So this is the section of analytical skills consisting of logical reasoning and is a part of qualitative aptitude. So let's move forward. There are three types of blood relation concept which we are going to deal in this series. हम लोग तीन टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे. आई डोंट नो आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी या नहीं पता होंगी. आप लोगों ने नॉर्मली शायद इस टाइप के क्वेश्चन फेस करोगे, दैट दैट पर्सन पॉइंटिंग टू दैट पर्सन एंड देन you have to analyze the answer. But now onwards you will have to learn that there are three types of blood relation concepts or questions you are going to deal in entrance examination. The first one is decoded, the jumble description. The second one is relational puzzles, and the third one is very important one, which is like a combination of a little bit of mathematics and qualitative. But you need not to do any mathematical operation, as I have mentioned earlier that it is an analytical part. So we will be seeing each and every section analysis bit by bit and their way of solution for each and every category. So let me introduce all the sections, all the part one by one. But what you have to do for that, you must understand this family tree. Family tree is a nice concept. You can approach any question of the blood relation part using this family tree concepts. So it is very important. Family tree is nothing just a pictorial representation of genealogical data. Genealogical data is basically word consists of two words, that is genetics plus logical. Genetics just because it's a part of blood relation, and logical just because it is a part of logical reasoning. So including mixing of these two words, we have extracted a data that is genealogical data, and we will be pictorially representing it in form of a family tree. Let me give you a brief. This is a family tree which I have created, and you will understand each and every concept bit by bit. Just you have to focus on these steps. The first important point in this family tree is that you have to represent female members by encircling a circle. As you can see, Shakuntala, Radha, Veena, एने, मायरा, ये सारे सर्कल ही पॉइंटेड हो चुके हैं जस्ट बिकॉज दे आर फीमेल मेंबर्स. एंड यू हैव टू मार्क डाउन रेक्टेंगल इन अ मेल मेंबर, यानी कि सारे फीमेल कैंडिडेट को आपको सर्कल फॉर्म में रखना है, सर्कल के अंदर रखना है, और सारे मेल कैंडिडेट को आपको रेक्टेंगल के अंदर रखना है. देन आफ्टरवर्ड आपको इनके रिलेशन डबल हेडेड एरो के साथ शो करने हैं, ठीक है ना. और वो शो करने के लिए आपको क्वेश्चन में मेंशन दिया होगा. यू हैव टू ग्रैब द डिटेल फ्रॉम क्वेश्चन, एंड देन afterward what you have to do, which is the most important three steps of this family tree, that if you are from the same generation, you can check out my second last point, all the family members of the same generation are represented in the middle of the family trees.
ये जितने भी फैमिली ट्रीज में जो अब सेम जनरेशन होंगे, लाइक जो हमारा जनरेशन चल रहा है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन द मिडल वन, एंड आवर अबव जनरेशन लाइक हमारे ग्रैंडफादर्स और हमारी ग्रैंड मदर्स, नाना नानी, ये दे ऑल विल बी रिप्रेजेंटेड अबव फ्रॉम आवर जनरेशन. एज यू कैन सी, शकुंतला एंड नारायण आर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, एंड सेम हैपन इन द केस ऑफ लक्ष्मी नारायण, दैट कृष्णा राव एंड राधा आर ग्रैंडमदर्स एंड ग्रैंडफादर्स. एंड आवर लोअर जनरेशन, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बिलो इन द फैमिली ट्री ऑफ आवर. वी हैव टू एनालाइज एवरीथिंग, वी हैव टू मेंशन एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू. एंड व्हाट इज़ आवर पॉइंट ऑफ व्यू? माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दिस कि हम लोग सेम जनरेशन में आएंगे, हमारे सेम जनरेशन के ऊपर वाले जितने भी जनरेशन है दैट विल बी मेंशन इन द अबव पार्ट, एंड नीचे वाले जितने भी जनरेशन है दैट विल बी अबव मेंशन इन द लोअर पार्ट. एंड दैट्स हाउ वी विल क्रिएट फैमिली ट्री. एंड दिस tree can be constructed using all the details of question mentioned in the data. So this is type 1, decoded the jumbled description. This section provides a description of relation between two members of the family in a jumbled manner. आपका कोई भी दो मेंबर का रिलेशन डिस्क्राइब किया गया क्वेश्चन के अंदर, एंड आपको डिकोड करना है वो जम्बल डिस्क्रिप्शंस, एंड यू हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट रिलेशन बाय ड्राइंग अ फैमिली ट्री. And yes, one more thing, it is not necessary that you have to build family tree every time. There are some question as well where you need not to take the reference of family tree. You can solve it by directly by just reading a question. So this is the part of decoded the jumble description, and you will be seeing the question when we are going to introduce our type 1 decoded the jumble description episode. In this episode, as I told you that I have to give introduction of each and every concepts, so I am doing. So you have to wait for the type 1, and we will be discussing the questions as well, same as we are going to do with type 2. Yes friends, one more thing, type 1 तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है. फैमिली ट्री का यूज़ करके इट विल बी क्वाइट ईजियर फॉर यू, बट यू हैव टू मग अप सम वर्ड्स विच आर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज टू बी इन ब्लड रिलेशन. ये टर्मिनोलॉजी वैसे तो आपको पता होंगे, बट ये मग अप करने के लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट विल रिड्यूस योर एफर्ट्स, इट विल रिड्यूस योर टाइम कंज्यूम अगर आपको नहीं करना है ज़्यादा, तो आपको ये मगअप करने पड़ेंगे ताकि आप क्वेश्चन देखें एंड तुरंत सीधा पता चले कि येस ओके, इफ़ इट इज़ मेंशन दैट पर्सन इज़ माय सन वाइफ, देन यू हैव टू नो दैट सन्स वाइफ इज़ टर्म्ड टू बी एज डॉटर इन लॉ एज इट इज़ मेंशन इन माय इंपॉर्टेंट रिलेशंस. सो यू हैव टू मग अप दीज रिलेशंस एंड यू हैव टू अप्लाई इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टाइम एंड एफर्ट. This will be happen not in only type 1, this will happen in type 2, type 3. These terminologies you will be used in this section on this series of blood relation. This is my type 2 relational puzzle. As it is consists of puzzle, we have to use more than a family and more than a members. That is what is I want to say. The number of family members are more here, and many times this section will have a union of 2 or 3 families. इसके अंदर जो families के member होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा दिए होंगे क्वेश्चन में, एंड नॉट ओनली ज़्यादा से ज़्यादा दिए होंगे, इसमें एक या एक से ज़्यादा फैमिली का भी लिंक कर रहा होगा आपको. एंड उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, जैसा मैंने आपको बताया इसमें एक या जैसे ये भी मेरे सामने जो फैमिली ट्री बना हुआ है, आई गेस दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनल पजल जहाँ पे दो फैमिली है अलग अलग एंड दे आर कनेक्टेड, एंड यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन डेटा, and then you have to apply and you have to got the right answer. So one should make use of the family tree to solve the question in the beginning, and once the concept is mastered, you can answer the question directly looking at the information. So मैं फिर आपको बताना चाहूँ, family tree is most important. You have to mug up the terminologies, you have to mug up the concepts of family tree in order to solve this series. Type 3 and the last but not the least, coded relation. In this section you will be coded, the relation will be coded in terms of symbols, specific codes like it is mentioned plus, dot, parenthesis, dollar, asterisk and hashtag, @ and many more symbols or specific codes, and you have to decode those relations hidden in the symbol. Yes, one more important thing to crack this coded relation, that you have to solve all the options to arrive at the final correct answer, because एक भी option आपको ऐसा लगेगा कि violate नहीं कर रहा है. That's why you have to go through the all option and you have to select the one better one. So this all was the introduction of my section blood relation. Hope so you will be getting it and you have got all the details regarding blood relation. And if you have any query, please follow and contact me on any of my social media that is already mentioned in the description box. And if you have any valuable suggestion, they are very welcome. Those valuable suggestion will really mean a lot to me.
So in the next episode, what will we will be dealing a different type of blood relation concepts and problems with their lot of interesting question. And this section is really very interesting. You have to watch and go with me in order to crack the blood relation sections. So be ready with your concepts throughout today, and we will take the reference of today's episode. We will be soon back with our new interesting episode of blood relation part 2. Please watches my previous episodes. I request you all to please watch my previous episode if they have not seen through it, and the description link in the description box I have mentioned the link, so please go through it. So yes friends, and one more thing, if you are a new user and you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, and if you like my video, then please like my video and don't forget to press the bell icon. And yes friend, one more thing, if you are a beginner and you want to learn Python, please subscribe my other channel PyTech. In the description box I have mentioned the link. So thanks for watching. Subscribe AKM App Tutorial.